बोल देता हूँ तुम्हारा जो थायरिस्टर लेके कैसे करोगे। डायोड का तो हो गया, थायरिस्टर लेके कैसे करोगे, कौन सा वेवफॉर्म्स लोगे, सात तो ऑलरेडी बोल दिए हैं, मैं थोड़ा ओवरलुक करके बोल देता हूँ। तो एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ श्योर, टेक योर टाइम। देखो स्टूडेंट्स, वेवफॉर्म्स के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो तो कौन सा रेजिस्टेंस लोगे या कौन सा इंडक्टेंस लोगे, उसके लिए मैं एक रेफरेंस दे सकता हूँ सबको। देखो, वैल्यू डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, वैल्यू किसी भी वैल्यू ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू, वेवफॉर्म्स उसी हिसाब से आएगा। सो जो तुम डॉक्यूमेंटेशन सेंड करोगे, एक स्टूडेंट किया है, ठीक है, सो उसका वो जो लिया है वो उसके हिसाब से किया है, लेकिन एक चीज़ वो छोड़ दिया है यहाँ पे, जो पैरामीटर सेटिंग का डॉक्यूमेंट ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट देना चाहिए, उसको मैं बोल दूंगा। तो उसका वेवफॉर्म्स आया है, वो सेंड किया है। सो उसी हिसाब से मैं अभी सर्किट में दिखा रहा हूँ, जो सेम सर्किट रहेगा उसमें एक थायरिस्टर रहेगा और पल्स जनरेटर रहेगा, और उस हिसाब से आर लोड एल लोड तुम वेरी करोगे। तो इसीलिए एक आर लोड जो लोगे, वेरिएबल रजिस्टर लोगे और वेरिएबल इंडक्टर लोगे, और वेरिएशन खुद करोगे, कितना परसेंट करोगे डिपेंडिंग ऑन यू, और जो वेवफॉर्म तुमको अच्छा लगेगा जो परसेंट में, तो उसका वैल्यू तुमको पता चल जाएगा, और उसी वैल्यू का एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड फिक्स इंडक्टर लेके तुम सर्किट सिमुलेशन कर सकते हो, ठीक है। सो मान लो ये तुम्हारा पावर सोर्स, सप्लाई सोर्स, सॉरी, हम्म, यहाँ पे जो था एस सी आर लोगे, एस सी आर बी टी 148 लेने से ठीक है। अगर बी टी 145 भी ले सकते हो, 148 भी ले सकते हो, ठीक है, किसी भी एक ले सकते हो। ये फ्री व्हीलिंग डायोड एक रखोगे, विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड शो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है, वेरिएबल रजिस्टर भी है, वेरिएबल इंडक्टर भी है। सपोज तुम
हाँ, सो यहाँ पे जो वेरिएबल रजिस्टर तो सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू चाहते हो 100 ओम्स के लिए, ठीक है, 100 ओम्स या कुछ भी, सपोज तुम इसको इसको भी तुम ज्यादा रेजिस्टेंस भी कर सकते हो, जो 100 ओम तुम आर वैल्यू 100 ओम लिया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे 0 ओम से 100 ओम्स तक तुम वैरी कर सकते हो। तो इधर ये परसेंट दे दिया, 1% इंक्रीमेंट में दिया 100 ओम्स तक, तो यहाँ पे ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 50% मीन्स 50 ओम, 38 ओम्स, उस हिसाब से माउस में ऐसे इसको रोल कर, इसको स्क्रॉल करोगे तो इस हिसाब से वो आएगा, 60 ओम हो सकता है, 64 ओम्स हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तुम्हारा उसी हिसाब से इंडक्टर भी ले सकते हो, वेरिएबल इंडक्टर, उसका वैल्यू भी तुम वेरी कर सकते हो, 1 हेनरी है, ठीक है। और इसका भी रेशियो 1 इंक्रीमेंट में लो, तो उस हिसाब से 50% मीन्स 0.5 हेनरी, और यहाँ पे जो होगा 0.48 या 0.38, तो उस हिसाब से यहाँ पे इंडक्टेंस वैल्यू भी तुम वेरी कर सकते हो। सो ये 50 ओम है, और ये इसका वैल्यू दे देता हूँ। Sir, what diode did you take, sir? Here, वेरिएबल रजिस्टर एंड वेरिएबल इंडक्टर। diode specification. डायोड बोल रहा हूँ, एक मिनट। ये तुम्हारा फ्री व्हीलिंग डायोड, जैसे तुम्हारा सिग्नल डायोड, ठीक है। Okay. देन एक स्विच दे दो इधर, एसपीएसटी स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच, उसको सीरीज करके डायोड में लगा दो। Sir, how do we decide which diode to use? Like this time we used IN 4007 and last time we used ये MER सिग्नल 462. पावर डायोड, ये पावर डायोड नहीं है, Okay. ये सिग्नल डायोड है। एक बार किया नहीं हुआ तो दूसरा कंपोनेंट चेंज कर दो। यहाँ पे कोई इसका रेजिस्टेंस इंडक्टेंस में वेरी होता है, तो वेरिएबल ले जाओ, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में इसको वेरी करने वो फॉर्म ठीक आएगा, तो उसका वैल्यू करस्पॉन्डिंग इंडक्टर एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस वैल्यू ले जाओ, डायरेक्ट रेजिस्टेंस से इंडक्टेंस ले जाओ, है ना, समझ में आ रहा है? फिर आ रहा है तो समझ में आ रहा है तो Yes. Yes, sir. सो उसी हिसाब से इस सर्किट को ग्राउंड करोगे, और इसका पल्स विड्थ टाइम पीरियड तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा कैलकुलेशन में खुद थियोरेटिकल कैलकुलेट कर दो एक पर्टिकुलर सर्किट में, उसका पल्स विड्थ एंड टाइम पीरियड डिपेंडिंग ऑन यू हैव टू वेरी दिस। देन उसमें एक करंट सेंसर दे दो, सो ये इंडिकेट करेगा आईएल, करंट सेंसर का जो रेशियो ठीक कर दोगे पहले, ठीक है। और एक वोल्टेज सेंसर जो जरूरत नहीं है, तुम अगर ऑसिलोस्कोप में दोगे, करंट सेंसर का भी जरूरत नहीं है, तुम IR1 कर सकते, ठीक है। तुम एनालिसिस के थ्रू भी कर सकते हो डायरेक्टली। फर्स्ट यू सिमुलेट द सर्किट,
No need to see external CRO. You first simulate the circuit by using current sensor also you can do. एक काम करता हूँ कर देता हूँ एक मिनट with respect to ground voltage of the same with respect to ground. ठीक है, तो अभी फ्री व्हीलिंग डायोड को ऑफ करके तुम्हारा काम है जो ये जो आ रहा है वैल्यू जो आ रहा है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर. ठीक है, ये जो तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस के ऊपर. ठीक है, इसका वैल्यू अगर चेंज करोगे तो वेवफॉर्म चेंज हो जाएगा. ये मेरा रेशियो स्केल रेशियो ठीक नहीं इसलिए इसे दिखा रहा है. कितना रहा है मिली 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 मीन्स this one, sorry, yes, this one. This see the second waveform is changing because of what? Because of variation of inductance. So as per your choice, I am telling the procedure. You have to do this. You have to vary the value of R and L, and you have to plot the waveform of both output voltage, input voltage, output current using only R load, using R and L load by varying your input signal, pulse width and time period. Okay, that is depending on you how much value of inductance resistance that you have to take, how much value of means time period pulse width you have to do, and you have to show the waveforms. Okay, using analysis you can do the same, or using your oscilloscope you can do the same, but it will be helpful for you to use a variable inductor and resistor so that you can get the at a particular waveform. Suppose you first theoretically you calculate the this input square wave signal, pulse width and time period. Then you first you take any, suppose you want to have range of resistance value or range of inductance value, are not getting what is the actual range. That case it will better to you to take a variable resistance and variable inductance of some with some tolerance range, so that we can vary the range and you will get proper waveform. At exact waveform you will get at what value of resistance and inductance that exact waveform getting, you remove the resistance variable part and put a fixed resistor fixed inductor instead of this. That is depending on your setting of input signal and your output R and L value. This thyristor and this freewheeling diode remains constant. If you on the switch with freewheeling diode, then if you off the switch without freewheeling diode. Okay, so output part you have to do, output signal you have to do. So next class you have to complete the thyristor part. Then after we'll move to analysis and study waveform obtained from controlled half wave rectifier, controlled half wave rectifier with source voltage
and that value of means the waveform of, you have to get the waveform of load current, source current, load voltage with different loads. Next experiment. Okay. So in case of thyristor control, so all of you change the firing pulse, okay, and see the waveform. What are the changes you can observe? Okay, so change the firing pulse means you can take it 0 degree, then 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 150 degree. Okay, changing with the time period. Okay, means pulse period means when the thyristor will be triggered or ACR will be triggered. Okay, so that you can study. Okay, so that also very convenient to understand that what are the changes you can observe. And for the theoretical portion, you can follow any of the standard book and that circuit diagram, everything right up. Okay, for 0 degree, what will be the waveform should come in the circuit. Okay, that you should put in the theory portions. For 30 degree, 60 degree, 90 degree. Okay, so somehow all should not possible. How much you can possible want to as a reference you can put, and the rest of the simulation you should do it in your multisim. You can follow multisim. Okay, you can follow MATLAB also, but my suggestion initially you try to do it in multisim. If you are not successful in the multisim, then you can switch it for MATLAB, but I think you will get the response in multisim also. Okay, selection of your switches is important. The pulse, that also very important when you are going to be triggered. Okay, as per the changing of the firing pulse, okay, that 30 degree, 60 degree, that you should show your steady state response, means how much your output has changing with the changing of the fire means pulse. And you can also measure the output voltage, it means average output voltage. Okay, so by changing of the firing pulse, and sometimes you can also plot the graph. Okay, with the changing of your firing pulse, how your output voltage has changes. You can measure it in the multimeter and make a table and plot it using any of the graphers there. You can plot it in Excel, no problem. You can plot it in MATLAB, no problem, but you can plot it. So with the changes of the firing pulse, okay, how your output is varying. Okay, is it make it constant or is it changing? Okay, if it is increasing or decreasing. Okay, if it is decreasing, what will be the reason? Try to realize. Okay, basically on time is reduced, definitely the average voltage will be reduced, decreased. Okay, so that you should plot, so for your better understanding. And the conclusion, it should be reflected. So your previous study, that previous experiment that you did, that simulation that you completed, and try to submit within couple of days, means today is Friday, you can submit it by Sunday midnight. Okay, that Rahul will again share you the link. Okay, where in the link, Google Form link will be consist of your roll number, name, email ID, and the PDF version of your uploaded file, and the file extension will be your roll number underscore experiment number. Okay, roll number underscore experiment 1, like that way. Okay, if we then experiment number 2 before Friday, again Rahul send you one link. Okay, so you just submit that file of your experiment number 2. Okay, coming before coming Friday. So next Friday again new experiment will be discussed. Okay, I think all of you able to understand our idea. So all of you able to, I think there is no doubt from your side. If you have any doubt, you can ask me, so you can give some answer for it. If you have any doubt. Okay, so I think all of you do not have any kinds of doubt on it. Okay, so just wait for a moment. Okay, so thank you. So